Inspiration Academy. I am Prerna. In this video, we will start NCERT series with Polity class 11th, which is Indian Constitution at Work. This is the book. In last video, I got some comments to use Hindi also in the video, so थोड़ा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे आज. Coming to the first chapter, Constitution, why and how. In this chapter, we will try to find out answer to these two questions. Why we need a constitution and how we got our Indian constitution. क्यों हमें ज़रूरत है और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो हमें कैसे मिला. What was the process of that? Before that, coming to the introduction, after reading this chapter, you will be able to answer what a constitution means, what a constitution does to society, how constitution governs allocation of power in society, and how the constitution of India was made. So what are functions of a constitution? As you can see, there are four main functions of constitution, but before discussing these, let us understand what is need of constitution. हमें संविधान constitution चाहिए क्यों होता है. सी इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, इतने रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में. तो व्हेन वी हैव डाइवर्सिटी तो उससे क्या होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सप्रेस करने की कोशिश करता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, मैन विमेन को एक्सप्लॉइट करता है, अडल्ट्स चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करते हैं फैक्ट्रीज में और वर्क प्लेसेस पे, एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो टू अवॉइड ऑल दीज व्हाट वी नीड टू हैव इज सम बेसिक रूल्स विच गिव बर्थ टू कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में होता क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कुछ हमारे राइट्स होते हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं, उन्हीं सब से मिलके क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन. तो यही हमारा फर्स्ट फंक्शन है. The first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among the members of society. एक समाज के लोग इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक साथ मिलजुल कर रह पाए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिना किसी को एक्सप्लॉइट किए. उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ बेसिक रूल्स एंड दोज रूल्स आर कंबाइनिंगली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. अब सपोज हमने रूल्स बना लिए, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स होने चाहिए. मेन विल डिसाइड और विमेन विल डिसाइड, यंग पीपल विल डिसाइड और ओल्ड पीपल विल डिसाइड, पीपल ऑफ वन रिलीजन विल डिसाइड और अदर विल डिसाइड. इफ वी गिव पावर टू वन सेट ऑफ पीपल, लाइक सिर्फ आदमियों को ही रूल्स बनाने देते हैं तो दे विल एक्सप्लॉइट विमेन. अगर सिर्फ हिंदू रूल्स बनाएंगे तो दे विल एक्सप्लॉइट मुस्लिम्स और वाइस वर्सा. अगर सिर्फ अडल्ट रूल बनाएंगे तो जो बच्चों के राइट हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होंगे. सो द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन दिस सोसाइटी. इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. अब ये वर्ड आया गवर्नमेंट. जब बेसिक रूल्स बनेंगे तो वो राइट हर किसी को नहीं दिया जा सकता कि जिसका मन करे जो रूल्स बनाओ. उसके लिए हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए. तो द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास हो, यानी कि रूल बनाने की पावर किसके पास हो. जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसके लिए पावर किसके पास हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा. द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिटेशंस ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज हम लोगों ने सरकार बना ली, वोटिंग की, सरकार बना ली. अब इफ वी गिव अनलिमिटेड पावर टू दैट गवर्नमेंट तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अस. जो उनका मन करेगा रूल बना देंगे, जो उनका मन करेगा बिल पास कर देंगे. दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेट लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स. दीज लिमिटेशंस आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम. The fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of society and create condition for a just society. अब मान लो हम लोगों ने थर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग उन पे लिमिट्स लगा दी. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस लग जाएं कि दे कांट इम्प्लीमेंट लॉज, दे कांट इम्प्लीमेंट स्कीम्स. उन्हें इतनी पावर देनी ज़रूरी है कि दे कैन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी. सो दीज आर फोर फंक्शंस. द कीवर्ड्स आर first function basic rules, we should have some basic rules. Second function, who will decide those basic rules, the power. Third function,
to have limit on those basic rules. And fourth, at least give that bare minimum freedom so that government can fulfill the aspirations of society. So these are basic functions of constitution. Now coming to the promulgation of Indian Constitution. Now what is this word promulgation means? Promulgation means declaration, यानी हम लोगों ने अपने संविधान के लिए घोषणा कब की थी. Indian Constitution was formally created by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949. Officially इन dates के बीच में बना था. It drew upon a long history of nationalist movement, we all know, the freedom struggle, that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoy immense public credibility. Now here is the key word, immense public credibility. अब मान लो संविधान तो बन गया, बट वो बनाया किसने है, दैट मैटर्स अ लॉट. कि आपके राजा ने आपके ऊपर संविधान को थोप दिया है, कोई आर्मी जनरल है, डिक्टेटर हैं, या जो लोगों के पसंद किए हुए नेता हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. तो अगर आपके जो लीडर्स हैं दे आर हैविंग इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इजीली एक्सेप्टेड बाय पीपल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वही पर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय दोज who were enjoying immense public credibility around the time of 1947. The final document reflected the broad national consensus. See here, that's why, because those leaders were having public credibility, that's why that final constitution was having broad national consensus at that time. Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all people vote on a desirability of constitution. कुछ कंट्रीज में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर what we can do is have a referendum कि जो local public है that can vote directly कि they want that constitution or not. But because India was having a huge population at the time of freedom struggle, so we can't have that referendum. That's why this immense public credibility is a catching word here. The Indian Constitution was never subjected to such a referendum, but nevertheless carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. So when we made the promulgation of Indian Constitution, December 1946 to November 1949. Now what is balanced institutional design? अब मान लो हमने Constitution बना दिया. What that Constitution should urge, what that Constitution should look for is balanced institutional design. और वो होगा कैसे? Fragment power in society intelligently so that no simple group can subvert the Constitution. अब balanced institutional design करने के लिए इस बैलेंस को अचीव करना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे होगा? जब किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा और दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास बहुत कम पावर नहीं हो और हर इंस्टीट्यूशन इक्वल पावर रखता हो. उसके लिए हमें जो सोसाइटी में पावर है उसे इंटेलिजेंटली डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, executive and judiciary. We will look in further videos what these legislature, executive and judiciary means, and even independent statutory bodies like election commission. This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, other can check. Now in this point, look what it is saying. The Indian Constitution horizontally fragments power. This horizontal word is here showing that legislature, executive and judiciary, these three bodies, these three institutions are equal in power and no one is above the other. An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of Indian Constitution. This excellent institution which we made with legislature, executive and judiciary and statutory bodies, this ensures the success of Indian Constitution. The third point is Constitution must strike the balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allows enough flexibility in its operations to adapt the changing needs of circumstances. अब बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होने के लिए दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम लोग टाइम टू टाइम चेक करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हो और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो. फोर्थ पॉइंट इज टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ अ चेंज. अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू इट्स पीपल. नाउ यहाँ ये कहना क्या चाहते हैं कि जब 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होंगे जो आज के टाइम के हिसाब से पुराने हो गए हैं या
सोसाइटी के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग अनएक्सेप्टेबल हो गए हैं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड हो कि वी कांट अमेंड इट, वी कांट चेंज इट, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज. वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं रिटेन कर पाएगा. ऑन द अदर हैंड, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फ्लेक्सिबल कि उसे जब मर्जी चेंज किया जा सकता है, तो वो सिक्योरिटी इंश्योर करने में फेल हो जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग टू द न्यू सर्कमस्टांसेस. दिस इज सेम पॉइंट कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था 1940s में, 47 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम की जो कोर वैल्यूज थी उस टाइम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐड की. बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और उन कोर वैल्यूज को प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है और हमने उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, तो नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन द सेम टाइम, अगर वो न्यू सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी आर हैविंग दीज डेज, अगर वो अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं हो, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी एबल टू फिट इन टूडेज सोसाइटी. इन बोथ केसेस the constitution will fail. So to have balanced institutional design, what we need to do? 1, we need to intelligently fragment power in society. 2, no single institution should have monopoly. Third, we should have fragmentation of power horizontally in different institutions. No single institution should get monopoly like legislature, executive, judiciary and all. Third point is we should have a right balance between authoritative and flexibility. These two are similar points. And the last point is to strike a balance between preserving core values and to adapt to the new circumstances. Up to here, we tried to answer why should we need a constitution. This why is done. Why we need a constitution? To preserve values, to have a balanced institutional design, to have enough flexibility, to have rigidity, both at the same time, to preserve core values but to adapt new circumstances. For all these things, we should have constitution. Now we will look at the second question. How was the Indian constitution made? Constituent Assembly was elected for undivided India. We all know this. It held its first sitting on 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14th August 1947. Its members was chosen with indirect election by the members of Provincial Legislative Assembly that has been established under the Government of India Act 1935. This act is very important. In later videos, we will discuss in detail about this act. It is said that more than 50% of our present constitution is just copy-paste of this Government of India Act 1935. So we are looking at how the Indian constitution was made. It was made by Constituent Assembly, which was reassembled for divided India. Second, each province and princely states or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh. As a result, provinces that were under direct British rule were to elect 292 members, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. The seats in each provinces were distributed among three main communities. We all know Muslim, Sikhs and General. The members of each community in provincial legislative assemblies elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote. We will have a detailed discussion on what this thing is, single transferable vote. Now, looking at this, why do we need a constitution? Let's have a recap. We saw that why do we need a constitution? It allows coordination and assurance, specifies the decision making power, that this was our second function. Limitations on those powers, third function, to fulfill the aspirations of society. This was our fourth function, and expresses the fundamental identity of people. Now what is this objective resolution? आप लोगों को चैप्टर में मिलेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से. हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? Pandit Jawaharlal Nehru moved objective resolution in 1946. This resolution encapsulated the aspirations and values behind the constitution. जो भी values या expression आज हमारे constitution में दिखाई देते हैं, like equality, liberty, democracy, sovereignty and a cosmopolitan identity, these all were there in objective resolution. So we can say that objective resolution जो पंडित नेहरू जी ने 1946 में मूव किया था, that was founding stone or foundation of our present Indian constitution. We can see these principles in our constitution, or for that matter in our preamble. We can see these words are clearly mentioned there.
So this was objective resolution moved by Pandit Nehru. Now the last slide is provisions adopted from constitution of different countries. Our Indian constitution is generally criticized for the fact कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया डालने की बजाय जो वर्ल्ड के उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट थे उनको लिया और उनको मिक्स एंड मैच करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. तो उस पर बेस्ड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री. सो वी विल लुक ब्रॉडली एट दैट. From British Constitution, what we took is first past the post system, parliamentary form of government, the idea of rule of law, institution of speaker is taken from British Constitution, lawmaking procedure is from British Constitution. And what we took from US, the main thing we took from US is fundamental rights, judicial review and independence of judiciary. From Irish Constitution, the major thing we took was DPSPs, are Directive Principles of State Policy. French Constitution gave us principle of liberty, equality and fraternity. From Canadian Constitution, we took a very important thing, that is a quasi-federal form of government, a federal system with strong central government. The idea of residuary powers is also taken from Canadian Constitution. So these were the major provisions which we took from different constitutions. So in this chapter, we tried to find two answers. Question to two answers, why we need a constitution and how we got our Indian constitution. I hope you got a fair idea of this. Why we need a constitution? We need to have coordination and assurance among people, specification of decision making power, limitation of powers of government to fulfill aspirations and goals of society, and express the fundamental identity of people. And how we got our constitution. The best way to use these videos is कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है पहले आप उसकी वीडियो देखें. जस्ट सिट एंड गो थ्रू द वीडियो, सी व्हाट इज देयर, व्हाट कंटेंट दैट चैप्टर इज हैविंग. एक बार बस सुन ले उसको, उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा. बट प्लीज डोंट स्टॉप देयर. जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ग्रैब योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड. I can assure you nothing can beat NCERT text for this exam you are preparing. So have faith in those books, have faith in those chapters, and that is the only reason I have started NCERT, not any other book. We will do other books also, but I wanted to give you a fair idea of what NCERTs are all about. बच्चे NCERTs को उठाते नहीं हैं कि स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं इनको और ये तो बच्चों की चीज़ें हैं, हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, हम डेयर एक्ट पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ सीख लेंगे. बट मेजर पोर्शन ऑफ एग्जाम आप NCERT से कवर कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एल्स आई कैन डू. बट इन बोथ केसेस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. These are links to my Telegram channel and group. You can follow me here on Telegram. See you in the next video. Thanks for watching.